You're watching First Take on Money9, India's first multilingual platform for personal finance from TV9 News Network. I'm Sakshi Batra. Well, on this platform, if you're watching us on YouTube, you must like and subscribe to our channel and also hit that bell icon to get notified about the latest content that we post on our channel. You must also like all our social media pages and get connected with us on money9.com through LinkedIn, Facebook, and Instagram as well, so that you can get posted about the latest market news and personal finance as well. Let's now move on to understanding what are we looking forward to for this show. So we have with us today a very special guest joining in from Centrum Broking. Mr. Nilesh Jain joins in, and he is going to help us understand how the market's really poised to move ahead in this week. Good morning, and thank you very much, Mr. Jain, for joining in. Let me understand from you, how are you looking at the markets for this week? Of course, the last week has been a stellar one, a historic one. We've seen record high levels for the Nifty being achieved as well. On an intraday basis, on one day, we also saw the Sensex climb to its lifetime high as well. How are you looking at the market with respect to the charts, and how are they poised to be in this week as well? Good morning, Sakshi. Sakshi, if you look at for the past 3 consecutive weeks, we have seen Nifty has continued its positive momentum. And the last week was a historic one, as you rightly said. And we expect this week as well to be another historic week. And we are expecting Nifty to test 15,800 levels from here on. And if you look at today's action, Nifty is sustaining above 15,700 levels, which is a positive sign. And on the downside, if you look at the breakout that we saw from the levels of 15,300, since then Nifty is making a high top and high bottom formation on the daily time frame, and the immediate base has shifted higher towards 15,500. So the next range that we are expecting Nifty to oscillate could be of 15,500 to 16,000, and the short term range could be of 15,600 to 15,800. We suggest every dip should be utilized as a buying opportunity till the time Nifty doesn't break below 15,500. And if you look at, on the other hand, the Bank Nifty, which was the laggard in the previous week, we believe that Bank Nifty may patch up the rally and may outperform from here on. And the immediate support for the Bank Nifty stays at 35,000. We expect Bank Nifty to move towards 35,800 to 36,000. And lastly, if you look at today's market, the only thing which is down sharply, which is India VIX volatility index, which is down by nearly 5%, which is a positive sign, and we have witnessed a continuous fall in the volatility that is giving comfort to the bulls. Currently, it is near about 15 levels, and we believe it may test the levels of 14, 14.5. Till the time it doesn't break above 18 levels, we believe the markets are likely to rally on the high side. Okay, so that's good news. The markets are likely to rally on the upside. We can see, rallies and levels of up to 16,000 on the Nifty as well, 36,000 on the Bank Nifty, and a whole lot of factors will be definitely working on it. Let's understand those in deep detail now. Mr. Jain, we understood that last week we had a whole lot of triggers on the macro front as well. We had the RBI policy, we had the auto sales numbers. Also, this time around, we are looking at the unlock trade to really happen, because now from today onwards, many states are actually announcing partial unlock as well. So that's something that is being taken positively by the markets too. We are seeing continuous decline in the COVID cases. What else is going to be on the top of the radar, and what is the market going to react on now? Well, you are rightly said, the unlock theme that we are witnessing from past couple of weeks, it's buzzing now. And the multiplex shares, the aviations, and these are the sectors that are looking good. And from here on, we may see further momentum to continue. And apart from that, the laggard, which was the PSU bank, which is now patching up. From past couple of weeks, we are witnessing a sort of a momentum and sort of reversal was already seen. So PSU banking space is likely to do well. And a couple of stocks that we like from PSU banking space is State Bank of India, one of the index heavyweight. We believe 500 plus could be the target in next couple of months. And apart from that, Bank of Baroda and PNB, these are the other PSU banking space that we are liking. And along with that, one of the cement space counter that we like, we definitely likely to cover in our recommendation as well. And apart from that, oil and gas space, in that particular segment, BPCL is one counter that is looking good. So these are the stocks that is giving a good breakout on the chart. Going forward, we believe the mid cap and small cap, these are the broader markets that are likely to do well. So one should definitely focus on the stocks and sector specific action.
Absolutely. And that was my next question to you, because we've actually seen the broader markets really outperform the markets in the last week, almost about 10-12% of an upside for both the small cap and the mid cap indices. And that's a sharp run up. So will this continue? And what should be the best strategy that investors should adopt when they're trading in these particular segments? Well, right. If you look at from the all-time highs, the broader market where which underperformed from past couple of years. Now the broader market where the laggard. Now looking at the momentum that we have seen in the broader market, we believe it is likely to carry forward, and one should definitely wait for stock-specific action to continue, and a breakout should come technically. Apart from that, I would suggest one should definitely accumulate the broader market stock specific action that we are expecting to continue. One should definitely accumulate in the portfolio. Going forward, next 1 to 2 year, we believe the mid cap and small cap counters are likely to do well, because looking at the heavyweight, the blue chips, which have already run up quite a lot, we believe there could be some sort of a consolidation in the blue chips, and the broader market are going to be the next team in next 1 or 2 years. Okay, next 1 or 2 years, if you're looking out for opportunities, then stick around and look for stock selection in these spaces, because Mr. Jain really believes that next 2 years should be definitely good ones for both the mid cap and the small cap indices. Let's move on to now understanding your stock recommendations. What are you buying today, and what are the recommendations for the viewers of Money9? Right, as I mentioned, one of the cement space that is Grasim, that is looking beautiful on the chart. It has provided a fresh breakout on Friday, and today we are witnessing a follow buying. So Grasim is one counter that one should definitely do not miss. It can be accumulated at the lower levels. One should definitely buy on dips, and the upside target that we are expecting from a very short term perspective could be of 1560, and the stop loss should be placed at 1470. The positional target definitely could be of 1600 plus. The other counter that we like from pharmaceutical space is Cadila Healthcare, where we have seen a symmetrical triangle formation breakout on Friday, and it is oscillating. It is consolidating from past couple of days. Now, looking at today's move as well, we believe Cadila could be the one particular pharma counter that could do well, and the short-term target that we are expecting is of 660. One can keep a stop loss of 620. The third, PSU, that is the theme that we believe going to outperform, be it PSU banks, be it PSU other stocks. BEL, Bharat Electric Limited, is one counter that has consolidated in past couple of sessions, and earlier also we have seen a sharp rally. So we believe going forward, BEL could do well. One can definitely buy at current level and buy on dip. 149 should be the stop loss. On the higher side, 160 is the short-term target that we are expecting. Okay, thank you very much, Mr. Jain, for sharing these stock recommendations and your views on the markets from here on. It will definitely help all the viewers understand how should they position their trades in this week as well. Many thanks for joining us. Let's now move on to see how the markets are really trading at this point in time. Of course, they had an opening above the 15,700 mark as far as the Nifty is concerned. A slight bit of gains are still being held on to as far as the benchmarks are concerned. अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 50 अंकों की बढ़त है, 0.1% तक की बढ़त, यानी कि बहुत ही माइल्ड गेन्स के साथ इस समय सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि 52,000 के लेवल के ऊपर ही है, 52,153 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 15,700 के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो अच्छा रुझान यहाँ पर भी है, अराउंड 0.2% तक का मूव है। 35,365 के लेवल्स निफ्टी बैंक में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करेंगे तो यही सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट्स में अगर आप देखें, स्मॉल कैप्स इस समय अपने रिकॉर्ड हाई के करीब ही 24,460 के लेवल्स पर, वहीं मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा रुझान है, 150 अंकों की बढ़त है, 0.7% तक की तेजी, और 22,667 के लेवल्स पर फिलहाल मिड कैप इंडेक्स भी काम कर रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं कि सेक्टोरली किस तरीके का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। केवल एक इंडेक्स जहां पर माइल्ड वीकनेस है और वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। बारिंग दिस इंडेक्स, ऑल द अदर इंडाइसेस आर स्टिल इन द ग्रीन। सबसे ज्यादा अगर आप बढ़त आज देखेंगे तो मेटल स्पेस में अभी भी जारी है, यहाँ पर 1% 1.25% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स में अभी भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, 0.8% तक का अप मूव यहाँ पर है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली,
कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पार्शियल अनलॉक अनाउंस हो चुका है आज से। उसी वजह से आप देखेंगे जो डिमांड सेगमेंट्स हैं, जो अनलॉक ट्रेड है, वहां पर आप एक्शन देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी में अच्छी तेजी है, आईटी स्पेस में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, फार्मा स्पेस माइल्डली अप है आज मार्केट्स में, और पीएसयू बैंकिंग स्पेस और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर देखने को मिल रहा है आज। अब देखते हैं कि निफ्टी की गेनर्स और लूजर्स किस तरीके से स्टैकअप है आज। अगर आप देखेंगे तो जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, स्टेट रन स्टॉक्स हैं, जैसे कि कोल इंडिया, यहाँ पर 3.5% तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही ऑटो स्पेस से, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक्स फिलहाल निफ्टी के टॉप गेनर्स में हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एफएमसीजी स्पेस से, टाटा मोटर्स ऑटो स्पेस से, और मेटल स्पेस से टाटा स्टील, इन सभी में 2%, 2.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। और पावर ग्रिड में भी आप देख सकते हैं करीब करीब 2% तक के अपमूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं कि लूजर्स में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल स्पेस से जरूर है, बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ही अगर आप देखेंगे तो 4% 5% तक की वीकनेस दिखा रहे हैं। एचडीएफसी यहाँ पर भी वीकनेस है, और साथ ही एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से थोड़ा माइल्ड वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स में हालांकि अगर आप देखेंगे तो 0.3% तक की वीकनेस है, लेकिन ये टॉप लूजर्स में से डेफिनेटली अपनी जगह बनाता है। ओवरऑल अगर देखें तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। जो इंडिकेशंस हैं, भले ही वो कोविड-19 को लेकर हो, अनलॉक ट्रेड को लेकर हो, केसेस नए केसेस में डिक्लाइन को लेकर हो, ये सभी पॉजिटिव हैं। ग्लोबल क्यू सभी सपोर्टिव है। हालांकि मार्केट्स काफी रन अप हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे मिस्टर जैन ने कहा कि यहाँ से भी आगे जाते हुए आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक और साथ ही ब्रॉडर मार्केट स्पेस में। इसके अलावा उन्होंने अपनी चुनिंदा पिक्स भी बताई हैं। चलिए इसी के साथ इस खास शो को यही समेटते हैं, लेकिन लगातार आप जुड़े रहिए money9.com पर। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को, और बेल आइकन को आप हिट करना मत भूलें, क्योंकि यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी Money9 कोई नया वीडियो पोस्ट करता है अपना पर्सनल फाइनेंस के स्पेस में, और साथ ही साथ मार्केट स्पेस में भी। साथ ही आप हमारे बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो करना मत भूलें। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी हम प्रेजेंट है, और साथ ही साथ money9.com हमारी वेबसाइट है जहां पर आपको आर्टिकल्स रीड करने को मिलते हैं। इन सभी के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, एंड यू कैन स्टे ऑन टॉप ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस एंड मार्केट न्यूज़ एज वेल। सो स्टे लॉग्ड ऑन टू money9.com।